Hello everyone, welcome back to our lecture series of ring theory. In this lecture we will discuss unique factorization domain. जैसा कि नाम से ही दिख रहा है हम ऐसे डोमेन आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर फैक्टराइजेशन यूनिक हो। हम हमारे पास एक फैमिलियर डोमेन भी है दैट इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स जहाँ पर हमने यूनिक फैक्टराइजेशन डिफाइन किया है थ्रू दी प्राइम्स। हमने हर एक इंटीजर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है और हमने कहा है कि वो हमेशा यूनिक होता है। So this is the sense of unique factorization, and since the set of integers is a domain, so we can think that Z is a unique factorization domain. Okay, so let us start this lecture by writing the definition of this unique factorization domain. So we are having definition, and this definition is about unique factorization domain, and this says that an integral domain D is unique factorization domain if it follows two property. Let me point out the first one. First is about every non-zero means non-identity additive identity elements. Okay, non-zero element of D that is not a unit can be written as a product of irreducibles of D, and this is the first property that the integral domain should have. अगर हर एक non-zero element which is not a unit can be written as a product of irreducibles of D. Now at this moment we must clear with the definition of a unit, irreducible and associates. Okay, so the second property is about uniqueness. Okay, so it says the factorization into irreducibles is unique up to associates and the order in which the picture appear. ओके, जैसे हमने रियल इंटीजर्स के लिए बात की है, हमने कहा है कि a को हमेशा हम इस तरीके से लिखते हैं p1 टू द पावर अल्फा 1, p टू द पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन। ये हमेशा एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है a के लिए। ओके, एसोसिएट्स हमने कैसे डिफाइन किए थे कि a एंड b आर एसोसिएट्स इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिट u सच दैट a इज इक्वल टू u टाइम v। ओके, तो इस केस में a और b दोनों एसोसिएट्स है। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन है भी किसी एलिमेंट के इंटीग्रल डोमेन के किसी एलिमेंट के लिए, तो वहाँ पर उनके बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए। ओके, अब इसे और अधिक समझने के लिए वी कैन कंसिडर सिंपलर वे ऑफ stating the unique factorization domain. So let me first revise these. So first of all, हम ऐसे इंटीग्रल डोमेन्स को यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कहेंगे जहाँ पर उस डोमेन का हर एक नॉन जीरो एलिमेंट विच इज़ ऑल्सो नॉट ए यूनिट कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररेड्यूसिबल्स। ओके, और जब हम उसे इररेड्यूसिबल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक होना चाहिए। और अगर हमारे पास हमें दिखने में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टराइजेशन दिख रहे हैं या फिर उसका जो रिप्रेजेंटेशन है फैक्टर रिप्रेजेंटेशन वो हमें अलग अलग दिख रहा है, तो वहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो केवल एसोसिएट तक ही डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब हमने किसी जगह ए लिख दिया है और दूसरे फैक्टराइजेशन में बी लिख दिया है, सो ए एंड बी आर लुकिंग डिफरेंट बट दे आर एसोसिएट्स। ओके, तो एसोसिएट तक द फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड ऑल्सो द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। ओके, हो सकता है हमने ए इसमें P1 P2 इस तरीके से लिख दिया या फिर P2 से स्टार्ट करके इस तरीके से लिख दिया, दे आर सेम इन द वैल्यू। ओके, सो अप टू ऑर्डर एंड अप टू एसोसिएट्स द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और अगर ये बात हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है इंटीग्रल डोमेन में, तो ऐसे इंटीग्रल डोमेन को हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कहेंगे और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे UFD भी बोलेंगे। ओके, सो लेट मी पॉइंट आउट कि इसे हम UFD ऐसा भी कहेंगे। ठीक है, अगर हम इसे और आसान लैंग्वेज में देखें कि नॉन जीरो एलिमेंट्स को इरेड्यूसिबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और इस फैक्टराइजेशन का यूनिक होना अप टू एसोसिएट, इस बात का क्या सेंस है। ओके, सो लेट मी राइट in another way. Okay, so we can say in another way to formulate part 2 of this definition is the following. हम सेकेंड पार्ट को कैसे कह सकते हैं? Second part can also be sense that if P1 to the power n1, P2 to the power n2, and so on, Pr to the power nr, and Q1 to the power m1, Q2 to the power m2, and so on, Qs to the power ms are two factorization of some एलिमेंट। ऑब्वियसली जिस एलिमेंट के बारे में हम इन फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं वो नॉन जीरो नॉन यूनिट होना चाहिए। ओके, हम डायरेक्टली सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एलिमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ irreducibles, which irreducibles? P1 P2 Pn and Q1 Q2 Qs. Okay, irreducibles Pi's and Qi's. Okay, where no two of the Pi's are associates and no two of the Q's are associates, then this R must be equal to the S। जिन irreducibles की फॉर्म में हम लिख रहे हैं that should be equal in number। okay, so R equals to S and each Pi is an associate of one and only one Qj, and in that case this Ni जो भी Pi की पावर है that must be equals to the power of this Qj।
ओके, सो दिस इज व्हाट डू मीन बाय द यूनिकनेस। अगर हमारे पास दो फैक्टराइजेशन हैं तो जिन इरेड्यूसिबल्स को लिखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो इरेड्यूसिबल सेम ही है अप टू द एसोसिएट्स। इसका मतलब कोई ये P2 के लिए यहाँ पर Q1 Q2 QS में से एक हमें ज़रूर इरेड्यूसिबल मिलेगा, दैट इज एसोसिएट विद P2। एंड इन दैट सेंस जो भी Q का पावर होगा, सपोज हमें MS मिल रहा है तो दिस MS पावर विल बी इक्वल टू N2। ओके, so they are equal in power, they are equal up to the associates, and this index की number of irreducibles कितने हम काम में ले रहे हैं, both are same। okay, so this is about the definition of unique factorization domain। I hope you clear with this। now come to the very famous unique factorization domain। so we know that from fundamental theorem of arithmetic, we know that every integer can be written as a unique product of primes, right? Theorem of arithmetic, every integer can be written as a product of, ये नंबर थ्योरी में हमने बार बार लिखा ही है ना, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, and this representation is always unique, right? So we can say we have a ready-made unique factorization domain, और उसे हम आज तक डिस्कस करते ही आए। So we can say, so the ring of integers is a unique factorization domain, okay? And if this z is UFD, then zx is also, and hence zx is UFD, okay? So from the fundamental theorem of arithmetic, we are having two very much familiar integral domains which are unique factorization domain।